Hello students, chapter number 8 function, lecture number 1. Let's start the function. We know while we are studying a set theory, we know that may exist a relationship between the elements of two different sets. Now we'll discuss the two different set. Here I draw a Venn diagram for set A and for set B. Let's call set A and set B. The elements of two different sets, the some such relations are known as functions. Some relations are known as functions. To understand clearly, here we make these some different sets. Here, for examples, in set A, the element in set A is 1, 2, 3 and 4. And 3, 5, 7, 9. That's the figure 1. We can see in this figure 1 the elements in set A, element in set A 1 has a correspondence relations with the 3 element 3 of set B. And how we get the value of elements in set B is, so we can say the 2x plus 1, 2x plus 1. The relation between the set A and set B is 2x plus 1. That means the element of set A is multiplied by 2 and then we add 1 in this, we get the element of set B. For example, see the first one. So 2 into 1 plus 1, 2 1 ja 2 plus 1 is equal to 3. Now second, 2 into 2 plus 1, so 2 2 ja 4 plus 1 5. See the 4, the element B is the relation with set B. The same with 3, 2 into 3 plus 1 is equal to 2 3 ja 6 plus 1, and the answer is 7. So 3 is correspondence with 7, and 2 into 4 plus 1 is equal to 8 plus 1, so 9. The element 4 is the relation with 9. So we can say the elements of set A are related with all the elements of set B. So the element of set A are the related with set B. Now see the second figure. Ten, 5, 15 and 2. That's a set A, set B, more or less, more and less.
and that's figure number 2. Figure 2. Or also we can draw one more figure. -2, -1, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Now see the function, we can say the relation fx is equal to x square. So the set A is related with the set B by x square. Here we can say set A and set B is more and less. The fx is considers more when the value is more than 10 or more than 10. 10 or more than 10 is considered as a more. If you will get the marks or whatever, 10 or more than 10, so 10 is considered as a more than 10 is also considered as a more, 5 is considered as a less because its number is less than 5, 2 is also considered as a less, so it's also considered less. Now the square, so 2 square is equal to 4, 1 square is equal to 1, 1 square is equal to again 1, and 2 square is equal to 4. So that's figure number 3. Now one more we'll discuss the constant figure. Now figure number 4. 1, 2, 3, 4, and here is 10. Fx is equal to 10. So the 10 is a constant number. So the 1 is correspondent. If we'll find f1, f1 is also 10. f2 is equal to 10. Now f3 is equal to 10. f4 is equal to 10. So the all have the same answer, 1 and only 10. That's a figure number 4. It's very simple. Its relation fx is equal to 10. So the set A is related with set B. All the elements of set A is related with one and only one element of set B. Now we'll discuss one more, last one. Set A and set B. Set A and set B. -2, 0 and 2, 1, 2, 3, 4, and the function fx is equal to x square. So -2 square is equal to 4, plus 2 square is equal to 4, and 0 square is equal to 0. We don't have any corresponding elements in set B for the set A, so we can say it is not a function. It is not a function. No corresponding elements of set A means 0 of set A are in the set B, so it is, we can say easily it's not a function. So that's different type of functions are there. We'll discuss the definitions and the type of functions. Now the definition of the function.
definition. If A and B, if A and B are are any two non-empty sets, two non-empty sets, and each elements of set A is related with one and only one elements of set B, one and only one element of set B by some rule, relation, or correspondence, or then it is called a function. Then it is called a function from set A to B, from set A to set B, and it is denoted by F, G, H, K, etc. Now let's see, again we'll discuss the definition, and that's very simple. If A and B are any two non-empty sets, for example this set A and this one is a set B, A and B, see, A and B are any two non-empty sets. It means there are the some elements in set A and the some elements in set B. Both are non-empty. So we can say the first condition is set A and set B must be the non-empty sets. ये दोनों set कैसे होने चाहिए? Non-empty set होने चाहिए. So the set A and set B are the non-empty sets, and each element of set A is related with one and only one elements of set B. The each elements of set A यानी set A का हर एक एलिमेंट्स सेट बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स के साथ मीन्स सिर्फ एक ही एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए. बाय मीन्स एनी रूल्स, रिलेशन और करस्पॉन्डेंस. one and only one elements of set B by some rules, relations or correspondence, then it is called a function from set A to B, and it is denoted by F, G, H, K, etc. means alphabet से नंबर से मीन्स उसे मेंशन कर सकते हो. सो द डेफिनेशन दैट्स वेरी सिंपल. तो मीन्स यहाँ पे मीन्स फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है वो मीन्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही रिलेशन मिल रहा है सेट बी में, वो है 3. 2 का मीन्स वी कैन गेट दी ओनली वन एलिमेंट्स इन सेट बी, इट्स 5. 3 के लिए इट्स ओनली 7 एंड 4 है उसके लिए ओनली एलिमेंट्स 9. सो वी कैन सेट इट्स अ फंक्शन. द सेम वे विल सी सम एग्जांपल्स. 10 वी गेट मोर ओनली. 10 के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है सेट बी में से. 5 का एक ही एलिमेंट्स है 7. 2 का एक ही एलिमेंट्स है लेस मीन्स. 15 का एक ही एलिमेंट्स है मोर, यानी 15
सेट ए का कोई एक एलिमेंट्स हो और मीन सेट बी के किसी दो एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ लेना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि ये सर दोनों हो रहे 5 और 2, बट 5 का सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, वो है लेस। 2 का भी सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है सेट बी में। सेट बी में एक वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे -2 का एक ही एलिमेंट्स है 4, ये +2 का भी एलिमेंट्स 4 आ रहा है, बट सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, वो है 4। मीन सेट बी में से और दूसरा कोई एलिमेंट्स उसके साथ रिलेशन में नहीं है। सो वी कैन से इजीली दैट्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो डेफिनेशन बहुत ईजी है। if a and b if a and b are any नॉन एम्प्टी सेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 and 5 और उसको स्क्वायर कर दूँ तो मीन्स लाइक 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 3 इज करस्पॉन्डेंस विथ 9, 4 विथ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 16 एंड 5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 25 मीन सेट बी। सो दैट्स कॉल अ सेट। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों सेट कैसे है नॉन एम्प्टी। अब वी हैव द एलिमेंट 3 4 5 एंड वी हैव द एलिमेंट 9 16 एंड 25 इन सेट बी। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स and each element of set A is related with one and only one elements of set B. A is related with one and only one element of set B. set B के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है। by some rules relation or correspondence, by some rules relation and correspondence, then it is called a function from set A to B, that is called function from A to B. It is called the function from set A to set B and it is denoted by the f, g, h, k, etc. So that's very simple. Now we'll discuss the type of function and the parts for the function: domain, codomain or range. So first we'll discuss the domain. कोडोमेन and range. First we'll discuss the domain, codomain and range. We know function is a unique relationship between the element of two different non-empty set. किसी भी नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच का रिलेशन है, किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच का मीन्स रिलेशन है। तो यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑब्टेन इन सेट बी, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की एक इमेज कहाँ से मिलती है सेट बी से। वी गेट द यूनिक इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन और फ्रॉम सेट बी। सेट बी में से तुम्हें एक इमेज मिल रही है हर एक एलिमेंट्स की। The set A is called domain. तो set A is known as a domain. Set A is known as domain and B is called codomain. So domain and codomain is very clear. On simple we can say f is the function from A to B. So in this function we get all the elements of set A and the elements of set A is known as a domain. It is known as domain and B it's called codomain. So set A के सभी एलिमेंट्स के लिए we get the functional or correspondence value in set B, unique value, it means one and only one value in set B. So the set B is known as codomain and A is known as a domain. Now the discussion about the range. तो रेंज दैट्स वेरी सिंपल. रेंज इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शनल वैल्यू ऑफ द डोमेन. डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी फंक्शनल वैल्यू हमें जो मिल रही है दैट इज कॉल्ड अ रेंज. सो range of the function that's very simple. A set or image of function, a set of images or functional value, images or
functional values of all the elements of set A. It means domain. We can say is domain is called range of the function. Is called range of the function. That's very simple. So clearly अब हमें ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए. अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन and codomain means, so for any two non-empty sets we get the unique value in set B for all the elements of set A. The unique image or unique value for elements of set A is obtained in set B. So set A is known as a domain and set B is called a codomain. And the range is, that's very simple, a set of images or a functional values of all the element of set A, it means domain, is called a range of function and it is denoted by RF. So we can say RF is equal to F1, F2 और F डोमेन मीन्स मिल सकती है यहाँ पे. डोमेन के एलिमेंट्स जितने भी है उसकी जो वैल्यू मिल रही है दैट इज कॉल्ड अ रेंज. सो दैट्स वेरी सिंपल. एंड नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड वन मोर थिंग्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो यहीं पे कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच.